Good morning. Am I audible? Good morning, Good morning, sir. Are you able to see the whiteboard? Yes, sir. Yes, sir. So I think I have given you some work, and some of you have done that. Sir, submit कर दिए sir. Yes, I have got the Yes, response. sir. I have got the response from 9 students only. Fine. So Madan, do you want to say something? No, sir. Okay. So actually, I have given you given you the work which is from the book which I have uploaded. So only 9 students have submitted that work, and I have got the response only from the 9 students. So today I will give you some problem regarding that part. Okay. So just wait for a moment. Okay. So the problem. So here. Questions related to Boolean algebra. Okay, so I am giving you the first question that you have to prove that. The first question is AB plus BC plus B bar C is equal to AB plus C. Okay, you have to prove it. Okay, so while proving this, you will have to use the Boolean laws or the Boolean rules. Okay, so let us take the LHS part. That is AB plus BC plus B bar C. Okay, so what we can do here? Sir, C common लेंगे तो B C plus common B लेंगे। complement 1 हो जाएगा. So we have AB plus, so within this BC and B bar C common लीजिए sir. we can C. take C as common, so we have B plus B bar. So we know that B plus B bar. What is this B plus B bar? 1 sir, 1. So B plus B bar is equal to 1. So those who have go through the rules, they can tell this output. Okay, so this B plus B bar is equal to 1. So here we can write it as AB plus C, where B plus B bar is equal to 1. 1. Okay, so you can see that it is nothing but the RHS, hence proved. Okay, so this is a very simple question which we can see.
Okay, the next question. The question number 2. Okay, so you have to simplify. Simplify a plus ab bar plus a bar b. Okay, so what we can do, we have a plus ab bar plus a bar b. So what we can take common? So yes, you can see here that this, in the first term and the second term, we can take a as common, and here we will have 1 plus b bar plus a bar b. Okay, so what is the value of 1 plus b bar? 1. Sir, 1. Okay, so 1 plus b bar will be equal to 1. So here we will have a, and 1 plus b bar. 1 plus b bar is always equal to 1. Okay, so सर 1 plus b 1 होता है ना सर? yes, Shubham, नो सर, नो सर, नो सर. it is a bar b. Now what we can do now? What we can do now? Anybody? सर ए को a डॉट a लिख सकते हैं. A को a डॉट a. a dot a लिखिए. Now फिर कॉमन ले लेंगे सर. what we will take common? नहीं, Yes, Shubham. डायरेक्ट a प्लस b भी लिख सकते हैं क्योंकि a कॉम्प्लीमेंट रिडंडेंट होगा थ्योरम से. Okay, so we can, you are telling that a plus a bar b can be written as a plus b. Okay, so using this principle, सर वहां पे सर आप पहले वहां पे सर मिस्टेक आप शायद किए सर. कहाँ पर? 1 प्लस बी इक्वल टू 1 होता है. 1 प्लस बी कॉम्प्लीमेंट 1 नहीं होता है शायद. Okay. You can don't tell शायद. आप उसे देख सकते हो, प्रूफ कर सकते हो whether it is right or wrong. Okay, so let us take 1 plus b. Okay, so let us put the values. b का वैल्यू एक बार अगर 0 रखा जाए, so if b is equal to 0, then the value of 1 plus b is equal to what? 1 plus 0 is equal to what? 1 plus 0 is 1 sir. 1. Okay, now we have 1 plus b ऐसा आया. Now if b is equal to 1 we will put, then what we will have? 1 plus b is equal to what? No sir, सही है सर. 1 plus 1 is equal to what? 1 sir. It is 1 because this is not binary addition. अगर हम binary addition करेंगे तो result अलग आएगा. We are using Boolean algebra. Okay, now we have the data as 1 plus b bar. So in this case, if I will put b is equal to 1, then what will be the equal value of 1 plus b bar? That is 1 plus 1 bar, means 1 plus 0 means 1. Okay, now let us put b is equal to 0. So 1 plus b bar का value कितना हो जाएगा? 1 plus 0 bar. Okay, that is 1 plus 1 is equal to 1. Okay, now any doubt? No sir. So कोई भी वेरिएबल हो, इस वेरिएबल के जगह में b बार के जगह में कोई भी वेरिएबल हो, b c d वो 1 ही होगा. ओके,
So here we do not do this. A dot A लिखने से कोई फायदा नहीं है यहाँ पर. सर सर ए के जगह 1 प्लस बी लिख दीजिए सर, ए के बाद. ए के बाद 1 प्लस बी लिख दें. तो ऑलरेडी तो हमारे पास यहाँ 1 प्लस बी लिखा हुआ था यहाँ पर. बी कॉम्प्लीमेंट लिखिए ना सर, 1 प्लस बी लिखिएगा तो अच्छा, शायद सिंप्लीफाई. प्लस बी नहीं, उसे हम और बड़ा नहीं करेंगे अभी. यहाँ पर हम एक चीज और कर सकते हैं. सर ए डिस्ट्रीब्यूटिव ए लॉ. सर हो जाएगा सर, ए प्लस बी करिएगा तो हो जाएगा सर. हाँ हो जाएगा बट वी कैन पुट अ डिस्ट्रीब्यूटिव रूल. Distributive rule. So what we can write it here? A plus A bar and A plus B. We can write it in this way. Okay. Now, what is the value of A plus A bar? 1 सर. A plus A bar is 1. And सर वहाँ ड्यूअलिटी थ्योरम यूज किए सर. कौन theorem? Yes. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सर. We have used, okay, so I am writing it here. We have used distributive rule. Distributive rule or law. Okay, we have used here distributive rule. ठीक है? Now, ओके सर. go for the next page. Okay. So here, let us take one another example as question number 3. Okay, so you have to simplify y equals A bar, B bar, C bar plus A bar, B, C bar plus A, B bar, C bar plus A, B, C bar. Okay, so we have this function, Boolean expression. So we have to simplify this. What we can do here, so हम यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या कॉमन हमें मिल रहा है. So yes, so from this term and this term, okay, and from this term and this term, what you can see,
that here in this term and this term B bar is common. So let us take B bar out of the bracket. So we will have A bar C bar plus A C bar. Okay. So here in this case, instead we can take one another thing common, two variables as common. So यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, बी बार कॉमन है और यहाँ बी बार कॉमन है, और इस फर्स्ट और सेकंड टर्म में हमें क्या कॉमन दिख रहा है, ए बार. ओके, सो instead of taking that one, we can take common as from these two terms. Okay, that will be more efficient way. So you can solve it in any way. आप कोई भी फॉर्मूला या किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो. Just you have to see the common parts. So from the first and second term also we can take the common values as. So you can see here A bar and C bar is common within these two terms. So we will have B bar plus B. Sorry, not B bar. We will have this. We will have B bar plus B plus from these two terms, what is common? From these two terms, what is common? C bar. A bar. A C bar is common. So we will have here B bar plus B. Now, all of us know that what is the value of B bar plus B? 1, sir. 1. Okay, so we will have A bar C bar 1 here plus A C bar 1 for this one. Okay, now A bar C bar here and A C bar is here. So what is common? C bar. Yes, C bar. is common. So we have A bar plus A. Now what we can write? This A bar plus A is nothing but 1. bar. So 1. this is bar. Okay. So this way we can solve the. This is not the only way. सिर्फ यही तरीका नहीं है, आप किसी और दूसरे तरीके से भी कुछ किसी और टर्म्स में से कॉमन लेकर भी आप रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं. और कोई जरूरी नहीं है कि ये जो आउटपुट आया है यही सेम आउटपुट सभी का है. देयर मे बी मल्टीपल आउटपुट्स. ओके, but all of the multiple outputs will get the same output. When you will put the values of A, B and C here in the bigger expression, the same value you will obtain when you will put the value of C bar here. Okay, that is the beauty of this simplification. So let us take one another question in which you will have to apply the De Morgan's rule. Okay, so we have the function y is equal to AB plus C bar and A plus B bar plus C, and here bar of the total term. So can anybody tell me the answer? Okay, let सर us. ए बी प्लस सी बार का कॉम्प्लीमेंट प्लस ए प्लस बी प्लस, सर बीच में प्लस में ब्रेक कर दीजिए सर पहले. Okay, so let us. तो पहले बड़े वाले ब्रैकेट को पहला ब्रैकेट में सर बार लगा के प्लस में कर. A B plus C bar we can put it as it is. उसके ऊपर सर कॉम्प्लीमेंट सर कॉम्प्लीमेंट. पहले जो हमारे पास अंदर वाला जो ये सर ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट. okay, so we can write it as A complement ए कॉम्प्लीमेंट डॉट B डॉट बी कॉम्प्लीमेंट. C. Okay, much. Now what we can do, सर फिर we will have to break फिर से डी. bigger line. So what we will Yes, get, sir. we will get
the thing as so instead of breaking this line, you can solve the problem firstly, equation firstly, and then you can break the line. Instead, आप या तो पहले लाइन को ब्रेक कर दो और उसके बाद सॉल्व करो, या फिर दूसरा तरीका है कि आप पहले अंदर के टर्म्स को सॉल्व कर लो, उसके बाद लाइन को ब्रेक करो. ओके, so when मल्टीप्लाई दी बोथ टर्म्स, हम इस टर्म और इस पूरे टर्म को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इस टर्म और इस टर्म को हम मल्टीप्लाई करें, सो वी विल हैव द टर्म्स लाइक ए बी ए बार बी बार प्लस ए सी प्लस ए बार बी बार सी बार प्लस सी बार और सी बार सी. क्या हमें ये मिलेगा? नाउ अभी यहां पर हमें क्या टर्म्स मिल रहा है? वी विल हैव ए बी ए बार बी बार. सो व्हाट यू कैन सी हियर, ये जो जीरो ओके ये जो टर्म्स है ए बी ए बार बी बार, सो हियर हम चेंज करके लिख सकते हैं. लाइक हमारे पास लिखा हुआ है ए बी ए बार बी बार, सो वी कैन राइट इट एज ए बार एंड बी बार. ओके, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बार? The value of a bar is equal to 0 and value of b bar is also equal to 0. Okay, 1 नहीं आएगा. Okay, 1 नहीं आएगा, 0 आएगा. आप वैल्यूज पुट करके देखिए, आप a का एक वैल्यू रखिए, a का एक वैल्यू एक बार 0 रखिए, फिर एक बार 1 रखिए. इन बोथ द केसेस यू विल गेट 0. ओके, सो इतना जो टर्म है, the value of this will become 0. Okay, plus we have a b c. सर वो कौन सा प्रॉपर्टी यूज किए सर जो चेंज कर दिए बार को? ओके, लेट अस नो सर हो गया सर, हो गया कम्यूटेटिव लॉ. नो फर्स्टली वी हैव यूज्ड हियर डी मॉर्गन्स रूल. वहां नहीं सर, लास्ट में यहाँ पर हम डी मॉर्गन्स रूल अप्लाई किया. डी मॉर्गन्स रूल क्या था? a प्लस बी बार इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार. ओके, तो इसका इस्तेमाल करके यहाँ पर चेंज किया. अभी यहाँ पर जो हमने किया ए बी ए बार बी बार, सो दिस इज द एसोसिएटिव लॉ. ये जो था मतलब इसे हमने ऐसा लिख दिया, दिस इज एसोसिएटिव लॉ. मतलब हम आगे पीछे कर सकते हैं टर्म्स को. लाइक a plus b can bc can be written as what? Or okay, so instead of a plus b का ब्रैकेट प्लस c. नहीं वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया, वो नहीं मैं कह रहा हूँ. एसोसिएटिव लॉ मतलब हम उन्हें आगे पीछे करके लिख सकते हैं. लाइक जैसे हमने यहाँ पर लिखा है, इन दिस केस ए बी ए बार बी बार को हमने क्या लिखा, ए बार को एक जगह कर दिया हुआ है और बी बार को एक जगह कर दिया हुआ है. ओके, सो दिस इज द एसोसिएटिव लॉ. नाउ दिस ए बी कम्यूटेटिव लॉ ना हुआ सर? यस, कम्यूटेटिव लॉ. ओके, सो वी कैन कम्यूट द टर्म्स. सो कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है मुझे बताएंगे कोई? सर a डॉट b इक्वल टू b डॉट है. ओके, यस सर. a plus b equal to b plus a sir. sorry, this is कम्यूटेटिव लॉ. यहाँ पर हमने कम्यूटेटिव लॉ का इस्तेमाल किया. सो नाउ वी कैन राइट इट एज व्हाट? ए बार बी बार सी बार प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बार? 0 सर, 0. ओके, और इस पूरे टर्म का कॉम्प्लीमेंट है. नाउ हमारे पास जो अभी टर्म मिला वो क्या टर्म मिला है? इज इक्वल टू व्हाट? वी हैव ए बी सी प्लस ए बार b bar c, the complement of the whole term. Now we can break the line.
So what we can, सी पर भी कॉम्प्लीमेंट है सर. yes, yes, C पर भी कॉम्प्लीमेंट है. तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं अब, डॉट B बार C बार का कॉम्प्लीमेंट. Okay. Now what we can write here, we can write it as, now इस लाइन को फिर से हम ब्रेक करें, इस लाइन. So it can be written as A bar plus B bar plus C bar, and this can be written as A bar plus B bar plus C bar. Okay. Now what we can write here, we can write it as A bar plus B bar plus C bar, and A complement का complement 2 times bar है. ए सर, ए प्लस बी प्लस सी. Okay. So this will be the result. Instead, अगर आप इसे फिर से सिंप्लीफाई करना चाहोगे तो ये फिर से एक बड़ा वैल्यू आ जाएगा. ओके, सो वी आर लीविंग दिस अप टू दिस स्टेज. ओके, सो इसी तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम है जो कि आप बुक से ऑल भी सॉल्व कर सकते हो. देयर आर सो मेनी practice problems in the book which I have uploaded. So go through all these type of problems. Okay. Now we will go through the gates. So I think some of you or all of you have gone through the basic gates. यस सर, यस सर. Yes, sir. तो यहाँ पर मुझे बताएंगे कि बेसिक गेट्स बताने की जरूरत है. कितने लोग, रेज योर हैंड्स. नो सर. सर प्लीज रेज योर सर, हैंड. एक्स नॉर और एक्स का प्रॉपर्टीज कम से कम बता दिया सर. ओके, सो प्लीज रेज योर हैंड. क्या यहाँ पर कोई है जिन्हें की बेसिक गेट्स के ट्रूथ टेबल या बेसिक गेट्स का जो प्रॉपर्टी है उसमें कोई प्रॉब्लम है? इन्हीं को प्रॉब्लम नहीं है. ओके. ओके, सुशील, Yes, sir. please tell me the Boolean expression of AND operation. Sushil, A cross B. huh? A product B. Okay, so A and B is written as this. So this dot represents A and B. Okay, thank you. Okay, Nitish. 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 Suprabha. Suprabha. So those who are not replying, I will make them absent. Vikas. Vikas. Krishna. Yeah. Okay, Krishna, tell me in case of AND gate, when we will get the output as 1? In case of AND operation, when you will get the output as 1? Krishna, am I audible? Krishna?
Okay. So here, what is the when we will get 1 in the case? सारा इनपुट 1 होगा तब. Yes, when A and B so both are 1. in this case, the output will be high only when all the inputs are 1. हाई. okay. और दूसरा प्रॉपर्टी क्या है एंड गेट का? दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? इफ एनी one of the input is low, the output will low, है ना? तो ये जो हम बात कर रहे हैं, ये हम पॉजिटिव लॉजिक में बात कर रहे हैं. पॉजिटिव लॉजिक कहने का क्या मतलब है कि जब हम 1 देंगे तो उसे हम पॉजिटिव मानेंगे और 0 देंगे तो नेगेटिव मानेंगे. ओके. पॉजिटिव लॉजिक में जब हम बात करेंगे तब हमें मिलेगा क्या कि द आउटपुट विल बी हाई ओनली व्हेन ऑल द इनपुट्स आर हाई. इन द on the other hand, if any one of the input is low, the output will be low. Okay. On the other hand, इसी चीज को अगर हम नेगेटिव लॉजिक में बात करें, तो ये जो चीज हमने लिखा है ये इसका उल्टा हो जाएगा. इसका मतलब है कि तब हमें क्या मिलेगा? अगर हम नेगेटिव लॉजिक में बात करेंगे तब हमें क्या मिलेगा आउटपुट? पहले लॉजिक में हमें क्या मिल रहा था? पॉजिटिव लॉजिक में हमें मिल रहा था क्या? High पे high. Okay, when both are high, the output will be high. And on the other hand, if any one of the input is low, the output will be low. Okay, if here it is A, here it is B, and here it is output Y is equal to A and B. In that case, this is the case for positive logic. ये positive logic का हुआ. Okay. अगर इसे हम negative logic में अगर कहें तो what will the output we will get? A, B and Y. So in this case, what is the output that we will get? So we will have, in this case, when both of these are low, we will get what? High. The high value. Okay. When, okay, the second case is It is low and B is high. high. So in this case, what will be the output? Low. Low. In this third case, we will have high and low. Low. We will get Low. low. On the last case, when both of them are high, okay, so here we will have Low na sir. here. So what will the output? High sir. Low, not high. सर ये तो 9 गेट हो गया ना. Huh? We are Nine. talking this in the negative logic. तो सर 9 गेट का भी तो यही लॉजिक होता है. Yes, it may be. It may be. Okay. So वो हो सकता है कि एक का पॉजिटिव लॉजिक और नेगेटिव लॉजिक जो है वो किसी और दूसरे का लॉजिक आ जाए, मे बी इन पॉजिटिव लॉजिक, ओके, या इन नेगेटिव लॉजिक. So, but is what we are interested in, we are basically interested in the positive logic signals. Okay. So let us check
सर ये वाला नहीं समझ में आया सर, निगेटिव लॉजिक मतलब। नेगेटिव लॉजिक मतलब जो भी हम पहले पॉजिटिव दे रहे थे दैट इज गिवन एज नेगेटिव, और जो हमने नेगेटिव दे रहे थे उसे हम क्या कह रहे हैं, पॉजिटिव। Positive. जस्ट यही है और कुछ नहीं है इसमें। ओके, सो इन द नेक्स्ट केस, एक इनपुट सब यस, एक इनपुट सब लो दे रहे हैं और दूसरा इनपुट आउट हाई, उसमें सर कितना लो हो जा रहा है, इसका क्या मतलब? सो यहां पर हमने क्या किया है, एंड गेट का प्रॉपर्टी क्या है, ए प्रोडक्ट बी। ए प्रोडक्ट बी, मतलब ए एंड बी जब हम कहते हैं तो वी विल हैव द आउटपुट एज द केस ऑफ द टेल इट एज द प्रोडक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर वैल्यूज, है ना। यस सर। So what we can say here that in the case when both of or any one of the input is low, in that case we will get the low value, क्योंकि इसमें सर वो एक तो पॉजिटिव लॉजिक में भी वही होगा ना, और निगेटिव लॉजिक में भी दोनों। पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, इसमें एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, so it happens. Okay, so we will see this negative logic again in the next class. ठीक है? So there is some doubt to me also. Okay, so in the next class I will clear that. So let us move forward. So let us take the truth table for XOR gate. Okay, XOR and XNOR. So XOR or XNOR जो है, these are the exclusive gates and which have the property which are different from the basic gates. So basic gates जो हम लोग जानते हैं वो क्या जानते हैं? Basic gates जिनको हम And or and not. yes sir, and or not sir, and basic gates or not, not, इनको हम कहते हैं यूनिवर्सल में, gates. यूनिवर्सल में NAND और NOR, the universal gates. NAND और NOR sir. We will have universal gates which are NAND और NOR. and NOR, and we have two exclusive gates. These are the exclusive gates. Okay. So these are the three classifications. So जो universal gates हैं, why these are called universal gates? सर सारा गेट्स उससे डेराइव कर सकते, बना सकते सर। सारे गेट्स को हम बेसिक गेट्स हो या एक्सक्लूसिव गेट्स हो, हम लोग यूनिवर्सल गेट्स से बना सकते हैं। So please Yes, rejoin again for 10 more minutes.